Now, good morning, students. Good morning, students. Now, today we'll start with the next topic, that is the gynoecium. Right? Gynoecium, as you know, is the female part in the flower. I have drawn the structure of the gynoecium. This upper part, this basal part where the pollen grains fall, it is called stigma, and this long tube, it is called style, and the lower basal swollen part is called ovary, right? And in this ovary, we are having the ovules. Clear? In this, we are having the ovule. Clear? And this ovule is attached on a special cushion-like structure, and we call that placenta. That special structure on which the ovule is attached, we call it placenta. And if these female parts, they are free, means they are not attached, we call it apocarpus. Here, free. All these female parts are free from each other, and then we use the term apocarpus. And if they are fused, then we call the term syncarpus. Clear? Now, how these ovules are arranged? Clear? Means the arrangement of ovules in the ovary. अब ये जो ovules हैं, they are having different type of arrangements. इनका arrangements अलग-अलग रहेगा बेटा. Number भी different रहेगा. Now, for this, if you will cut the fruit, you will find that some seeds are arranged, because these ovules later on change into seed. जैसे आप टमाटर काटते हैं, उसके अंदर आपको seeds मिलते हैं. So, firstly, वही seeds ovules थे. तो जैसे seed का arrangement है, वैसा ही ovule का arrangement रहता है, right? तो हर एक फ्रूट में आप देखते हो अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं. तो ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में अलग अलग रहता है, और उस अरेंजमेंट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्लेसेंटेशन. क्लियर? व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दैट? प्लेसेंटेशन. व्हाट इज प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, एंड इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप. नाउ लेट्स सी द टाइप्स. नाउ द फर्स्ट इज मार्जिनल. क्लियर? द फर्स्ट वन इज marginal type of placentation. Now, in case of marginal type of placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, right? And the ovules are born on this ridge. You can see in the diagram. So, this is the, in marginal placentation, you will find that it will form this, and the ovules are grown on the ridge, margin. Example is P. आपने हरे मटर खाए होंगे. So, that is the example. Now, second is axile. Clear? In case of axile placentation, the ovules are attached to it in multilocular ovary. If you will find, the ovary is divided into these three locules, 1, 2 and 3. These three locules are there, right? So, in this case, the axile placentation, ovules are attached to it in multilocular ovary, and the placentation is said to be axile. And the example in this case is China rose. Clear? Example is China rose in this case. And next is parietal. Clear? The ovules develop on the inner wall of the ovary, on the peripheral part. You will see this is the ovary, and it is ovules are grown on the periphery. Clear? Parietal parts. So this type is called parietal placentation. Clear? Then last is basal. Clear? Next is free central. In this case, you will find that placenta is free in the center and ovules are attached on it. Right? In this case, it is free and the ovules are attached on it. Right? And the next is, you can say, the basal. Clear? In case of basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary, and a single ovule is attached to it. Example is sunflower. अगर हम इसकी example की बात करें, example is sunflower. So these are the different type of placentation depending upon the arrangement of ovules in the ovary. Now, the next is the fruit. Clear? Now, what is fruit? Fruit is basically the ripened ovary. जब बेटा ovary पक जाती है after fertilization, then we call it fruit. क्लियर? तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट. एंड इफ द ओवरी इज राइपन विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है,
उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देन दैट फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, राइट। अगर पक के फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी पक रही है देन इट इज अ नॉर्मल फ्रूट, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन के बिना वो राइपन हो रही है देन दैट फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एंड नाउ द फ्रूट हैज पेरिकार्प, जिसको हम उसका फ्रूट का लेयर बोलते हैं, कवर कह लो, वॉल कह लो, एंड सीड। किसी भी फ्रूट में दो चीजें होती हैं, पेरिकार्प एंड सीड, क्लियर। बट इफ दिस पेरिकार्प बिकम्स थिक एंड फ्लैशी, अगर ये थोड़ी थिक और फ्लैशी हो जाती है तो पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एपिकार्प जो सबसे बाहर है, मेसोकार्प जो मिडल लेयर है, एंड एंडोकार्प इज द इनर लेयर, राइट। तो 3 लेयर्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर आपको सीड मिलेगा। In case of mango and coconut, we call it drupe, right? Now, as they develop from monocarpellary superior ovaries, monocarpellary superior ovaries we have already discussed, एक ही ओव्यूल होगा, ओवरी सबसे ऊपर होगी, right? And one seeded, आपने मैंगो को देखा, उसमें एक ही गुठली निकलती है। Now, in case of mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, बाहर आपको छिलका मिलता है, और जो मिडल मीजोकार्प है वो गुद्दा जिसको आप खाते हो, राइट। फिर उसके बाद आपको अंदर एक हार्ड लेयर मिलेगा गुठली के बाहर, विच इज एंडोकार्प। इन कोकोनट ऑल्सो, क्लियर। मीजोकार्प इज फिब्रस, उसमें आपने देखा वो सारे धागे धागे से होते हैं, दैट इज द मीजोकार्प। सो दिस इज हाउ द फ्रूट्स आर डिवेल्प एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली, ठीक है।